restart. So now we are talking about the SOLE, soul. There are four layers of the soul, and I have myself tabulated it. अभी तक वो टेबल आया नहीं है किसी के हाथ में, इसके लिए किसी बुक में आया नहीं, थोड़ी दिन बाद आ जाएगा. ऑल दिस फ्लो चार्ट्स एंड ऑल ना आई यूज्ड टू मेक, और वो कुछ बुक्स के लोग ना केएम में आके स्टूडेंट के नोट्स लेके जाते थे. फाइनली दे एक्नॉलेज्ड मी एट इन वन ऑफ द बुक्स. So there are four layers, and each layer there are वो दिख रहा है? Each layer there are muscles related to hallux, there are muscles related to digits, there are muscles related to little finger or digiti minimi, and there are long tendons. There are long tendons. Okay? Layer number one. Layer number one, there is a muscle. So this actually layer number one will be lowest. After skin, superficial face, the plantar aponeurosis will cause layer 1, then layer 2, layer 3, layer 4. There is flexor digitorum brevis. Flexor digitorum brevis. तो मैंने आपको बोला था कि पहले बहुत सारे बच्चे होते थे किसी घर में, तो बड़े बच्चे को कुछ स्पेशल मिलता था, छोटे बच्चे को स्पेशल मिलता था, बीच वाली जनता को कुछ नहीं मिलता था. तो जैसे ही बीच वाली जनता को फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मिला, ये हॉलक्स और डिजिटी मिनिमी शोर मचाने लगे, बोले हम लोग को भी चाहिए. तो लेयर नंबर 3 में फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, ऐसे उनको ले चलो, रोने का नहीं. एंड इन द पॉलिसिस वी हैड सीन वन मसल. पॉलिसिस में आपको याद है क्या? पॉलिसिस यहाँ पे थिनार में 4 मसल्स थे. 3 of them were supplied by median nerve and only 1 was supplied by ulnar. कौन सा था वो? एडक्टर, एडक्टर पॉलिसिस. तो यहाँ पे है एडक्टर हॉलिसिस. एडक्टर हॉलिसिस. This will be supplied by lateral plantar nerve. Tibial nerve will divide into medial plantar and lateral plantar. Medial plantar acts like median nerve, lateral plantar acts like ulnar. Okay? इनको सेपरेट मिल गया. Then layer number 3 has then 3 muscles. What are those 3 muscles? Flexor holicis brevis, flexor digiti minimi brevis, and adductor holicis. Abductor holicis is here. Abductor holicis is here, and abductor digiti minimi. Abductor digiti minimi is here. That completes our layer 1 and layer 3. Layer 1 and layer 3. Okay? आप पूछेंगे सर ये एग्जाम में आने वाला है. अभी आजकल ऐसा हो गया ना आपका लाइफ, ऐसे इतना शॉर्ट टर्म मत बन जाओ. आपको नीट एग्जाम देना है, आपको सुपर स्पेशलिटी देना है. ओके? तभी यू कैन नॉट स्टार्ट reading about these muscles.
Now layer 2 and layer 4, common in them is long tendons. दोनों में long tendons होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ये लेयर 2 में रहते हैं इनके टेंडन्स, बराबर है ना। आपने टॉम, डिक एंड हैरी यहाँ से जाते हैं तो वो लेयर 2 में रहते हैं, दे आर इन लेयर 2। In our hand, we had 2 flexor digitorums, superficialis and profundus. And on the profundus, there were some muscles. What were those muscles? Lumbricals. So similarly, on this flexor digitorum longus, also there will be lumbricals. There will be one more muscle here, and I'll tell you about this muscle. Now suppose this is the hallux, and ये आपके 4 डिजिट्स हैं बाकी के, तो मीडियल साइड से ऐसे डिजिटोरम आता है और स्प्लिट होता है। इट इज कमिंग फ्रॉम द मीडियल साइड लाइक दिस, मीडियल मैल्यूलस के यहाँ से ऐसे आके वो 4 दे देते हैं। टू स्ट्रेटन द पुल, to straighten the pull of this muscle, ये अगर खींचेगा तो ऐसा कुछ तो आड़ा टेढ़ा खींचेगा, इसके लिए यहाँ पे एक मसल दिया है, that is flexor digitorum accessorius, flexor digitorum accessorius, flexor digitorum accessorius। समझे आप, ये मसल ऐसे मीडियल साइड से आके ऐसे जा रहा है। So to straighten its pull, there is a muscle kept, that is flexor digitorum accessorius. So that completes our 3 layers. See, Tom, Dick and Harry, they come from the medial side. Holosis तो ऐसा चला जाता है। Digitorum medial malleolus के यहाँ से आके, मीडियल मैल्यूलस के यहाँ से ऐसा जाता है, फिर यहाँ पे उसके 4 टेंडन्स में स्प्लिट होता है। सो नाउ इट इज कमिंग लाइक दिस, ऐसे आ रहा है ना, ओके। तो उसके लिए उसका पुल स्ट्रेटन करने के लिए देयर इज वन मसल विच इज अटैच्ड टू इट्स टेंडन, दिस मसल। सो इट pulls all the 4 digits properly behind, that is accessorius. Layer number 4 will have those muscles. क्या रह गया अभी? हाँ हाँ, ऊपर चली गई क्या लेयर 4? मतलब दिस इज सोल पे ही है, इंटरॉशियाई। सो पामर इंटरॉशियाई and dorsal interossea. All these interossei lumbricals will be attached to dorsal digital expansions. Palmar interossei and dorsal interossea. And this will also have long tendons. This will also have long tendons. कौन सा टेंडन है जो lateral side से अंदर जाता है और medial side पे insert होता है? Peroneus longus, peroneus longus, then peroneus longus and tibialis posterior, tibialis posterior. So you realize the similarity between layer 2 and layer 4. There are long tendons. Okay. Layer 1 had something like the digitorum brevis. उसका corresponding part for hallux and digitum minimi is in layer 3. इसमें additional adductor holosis, यहाँ पे abductor holosis, abductor digitum minimi, उसमें brevis नहीं है because longus नहीं है ना, you don't have abductor holosis longus, so we just call it abductor holosis. So these are the layers of SOLE, layers of the soul. अभी इतना अच्छा कृषांक तुमने सबने डायग्राम बनाया,
मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। कनिंगहैम्स में 6 भी दी होमवर्क। मैं आपको होम इस सब के आगे आपको या तो मीडियल प्लांटर नर्व या लैटरल प्लांटर नर्व लिख के लाना। ओके, मोस्ट ऑफ दीज विल बी मीडियल प्लांटर नर्व, बाकी सारे हाँ अगेन लम्ब्रिकल्स में एक हाथ, हाँ लम्ब्रिकल्स में वैसा था ना, अपर लिम्ब में भी लंबर 1 and 2। ओके, so most of the muscles here are supplied by lateral plantar except for the muscles of the hallux or first lumbrical, okay, except for adductor hallucis because वहाँ पे क्या था, adductor pollicis was supplied by ulnar, यहाँ पे adductor hallucis will be supplied by lateral plantar, okay।